Hello students, this is our 11th lecture of material science in which we study the solution and mixing of materials in each other. So to understand this, we have to know about the Home-Rothery rule. Home-Rothery rules, named after William Home-Rothery, are a set of basic rules that describe the conditions under which an element could dissolve in a metal, forming a solid solution. There are two sets of rules. One refers to the substitutional solid solution and other is referred as interstitial solid solution. So first is substitutional solid solution. For substitutional solid solution, Home-Rothery rules are as follows. The atomic radius of the solid and the solvent atoms must differ by no more than 50%. यानी कि जो रेडियस है एटम्स की सॉल्यूट की और सॉल्वेंट की उनमें 15% से ज़्यादा रेट का डिफरेंस नहीं होना चाहिए. द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मस्ट बी सिमिलर. जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का वो सिमिलर होना चाहिए. कंप्लीट सॉल्युबिलिटी अकर्स व्हेन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट हैव द सेम वैकेंसी. यानी कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की सेम वैकेंसी होगी तो कंप्लीट मिक्सचर आ जाएगा या कंप्लीट सॉल्युबिलिटी आ जाएगी. ए मेटल विद लोअर वैलेंसी इज़ मोर लाइकली टू डिजॉल्व इन द मेटल विद हायर वैलेंसी. यानी कि लोअर वैलेंसी वाला मेटल हायर वैलेंसी में कम मिलेगा. द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट शुड हैव सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी difference is too large, then metals tends to form intermetallic compounds instead of solid solution. Interstitial solid solution rule. अब वो थे substitutional, ये interstitial. Solute atom should have radius no larger than 15% of radius of solvent atom. Similar है जैसा पहला था. The solute and solvent should have similar electronegativity. ये भी similar है. They should show a wide range of composition. This section may be confusing or unclear to readers. In particular, this statement is either circular or contradictory. So fourth is valency factor. Two elements should have the same valency. The greater difference in valency between solute and solvent atom, the lower the solubility. Now, solid solution. What is solid solution? A solid solution is a state solution of one or more solute in a solvent, such as multi-component system is considered a solution rather than a compound. When the crystal structure of the solvent remains unchanged by addition of solutes, and when the chemical components remains in a single homogeneous phase. This often happens when the two elements involved are close together on a periodic table. Conversely, a chemical component generally results A chemical composition generally results when two metals involved are not near each other on the periodic table. The solid solution need to be distinguished from mechanical mixture of powdered solids like two salts, sugar, and salt extract. The mechanical mixture have total or partial miscibility gap in the solid state. Examples of solid solution include crystallized salts from their solid mixtures, metal alloy, and most solid. In the case of metal alloy, intermetallic compound occur frequently. The solute may incorporate into the solvent crystal lattice subsequently.
by replacing a solvent particle in the lattice or interstitially by fitting into the space between solvent particle. Both these types of solid solution affect the properties of material by distorting the crystal lattice, distorting the physical and electrical homogeneity of the solvent material. Some mixtures will readily form solid solution over a range of concentration, while other mixture will not form solid solution at all. The prosperity for any two substances to form solid solution is complicated matter involving the chemical, crystallographic, and quantum properties of the substance in question. The substantial solid solution, in accordance with Hume-Rothery rule, may form if the solute and solvent have similar atomic radii, 50% or less difference, same crystal structure, similar electronegativity, similar valency, a solid solution mixture with others to form a new solution. The phase diagram of an alloy of two metals which form a solid solution at all relative concentration of two species. In the case of pure phase of each element is of the same crystal structure, and the similar properties of the two elements allow for unbiased substantial through the full range of the relative concentration. Solid solutions have important commercial and industrial application. As such, mixture often have superior properties of pure material. Many material alloys are solid solutions. Even small amounts of solute can affect the electrical and physical प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्वेंट। अब ये डायग्राम में देखो, इसमें दिखाया हुआ है दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तरफ है 100% ए है और एक तरफ 100% बी है। अब जैसे जैसे ए बी का रेशियो मिलता जाता है तो ए बी अलग अलग तरह के प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। ऊपर की तरफ जब हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो एक तरफ एल प्लस एल्फ़ा, एक तरफ एल प्लस बीटा, एक तरफ अल्फ़ा है एक तरफ बीटा है और बीच में उनके नीचे दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट तरह के बाइनरी फेज डायग्राम दो सॉल्यूट का रिप्रेजेंट कर रही है ये डायग्राम। तो इसमें होता क्या है कि पहले एक तरह का मटेरियल फॉर्म होता है, ए तरह का, ए से अल्फ़ा और बी से बीटा। अब जैसे जैसे इनकी कंपोजिशन बढ़ती जाती है तो अल्फ़ा बीटा दोनों इंक्रीज़ होते जाते हैं। एक तरफ लिक्विड फॉर्म होती है, केवल लिक्विड फॉर्म प्लस अल्फ़ा स्टेट होती है, एक तरफ लिक्विड फॉर्म प्लस बीटा स्टेट होती है। और इस लाइन के बीच में जहाँ लिक्विड फॉर्म ख़त्म हो जाती है ये पूरा सॉलिडियस होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। और इनमें अलग अलग जगह पे अलग अलग परफॉर्मेंस होती है और अलग अलग केमिकल कंपोजिशन होती है। द बाइनरी फेज डायग्राम फिगर 2 shows the phase of mixture of two substances in varying concentration, and the region labeled is a solid solution with the acting as the solute in a matrix of on the other end of the concentration scale. The region labeled is also a solid solution with acting as the solute in matrix of the large solid region. In between the end solid solution labeled is not the solid solution. Instead an examination of the microstructure of mixture in the range would be revealed two phase solid solution in the end of solution and in would form separate phase, परहैप्स लेमिना और ग्रेन्स। या तो वो लेमिना कंसंट्रेट करेगा, एक लेमिना बनाएगा, या फिर ग्रेन स्ट्रक्चर में वो डिवाइड हो जाएगा।
तो इस तरह से बाइनरी डायग्राम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। ओके, थैंक यू।